and welcome to the Q1 FY2024 earnings conference call of Tips Industries Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I would now like to hand the conference over to Mr. Nikunj Jain from Orient Capital. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Carol. Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you for the Q1 FY24 earnings conference call of Tips Industries Limited. To discuss this quarter business performance, we have from the management Mr. Kumar Taurani, Chairman and Managing Director, Mr. Girish Taurani, Executive Director, and Mr. Sushant Dalmia, Chief Financial Officer. Before we proceed with the call, I would like to mention that some of the statements made in today's call may be forward-looking in nature and may involve risk and uncertainties. For more details, kindly refer to the investor presentation and other filings that can be found on company's website. Without further ado, I would like to hand over the call to the management for his opening comments, and then we will open the floor for Q&A. Thank you, and over to you, sir. Good afternoon, everyone, and welcome to the Q1 FY24 earnings call of Tips Industries Limited. It's my pleasure to share with you the highlights of our performance during this quarter. At Tips Industries, we have been working hard to create and deliver high-quality music that resonates with our audience. Our efforts are yielding results. The company has reported a revenue growth of 54% for Q1 FY24 as compared to Q1 FY23. We now have over 85.5 million subscribers on YouTube in Q1 FY24. Our YouTube views were 48.3 billion. YouTube views has grown 132% compared to the same quarter last year. The board has declared an interim dividend of ₹1 per share as part of our ongoing efforts to reward our shareholders. With this, I will hand over the call to Sushant Dalmia, our CFO, to take you through the financial performance in detail. Over to you, Sushant. Thank you, sir, and welcome everyone to our Q1 FY24 earnings call. As you know, at Tips Industries, we charge off the entire content cost and the quarter of release. We have followed this policy since the inception of the company, and we will continue with this accounting policy in future as well. We find this to be the most prudent way of accounting for our business. However, we continue to receive a lot of questions about the impact of our conservative accounting policies on our numbers from both our existing as well as potential new shareholders. To clarify the impact of different accounting policies, we have done some calculations and I'll share the same with you. If we were to follow the industry accounting practice of amortizing content costs over 10 years, then our EPS for FY23 would have been rupees 7.91 compared to a reported EPS of rupees 5.91, which means it would have been higher by 34%. We'll be doing these calculations on an annual basis and will continue to share the outcomes with you. Now let me take you to the financial highlights of the quarter gone by. The company has reported a healthy quarter. Our revenue for the quarter was rupees 52.6 crores as compared to rupees 34.2 crores in Q1 FY23. Year-on-year revenue growth was 54%. Operating EBITDA for the quarter stood at rupees 35 crores versus rupees 22.4 crores in Q1 FY23. That's an annual growth of 56%. The operating EBITDA margins were at 66.6% for this quarter. Our profit after tax for Q1 FY24 stood at rupees 27.1 crores versus 17.2 crores in Q1 FY23. A growth of 58%. PAT margin for the quarter was 52%. With this, I open the floor for discussion. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we will now begin the question-answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star then 1 on your touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star then 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles.
first question is from the line of Swapnil Kabra from SK Enterprises. Please go ahead. Hi, sir. Am I audible? Yeah. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सीक्वेंशियली अगर हम लोग यूट्यूब व्यूज को देखें तो हमने अच्छा ग्रोथ दिखाया. फॉर एग्जांपल 33.6 बिलियन व्यूज से हमारे व्यूज 48.3 बिलियन हो गए. तो सर बट सेम अगर मैं टॉप लाइन को ऑब्जर्व करूँ तो टॉप लाइन ऑलमोस्ट अपना फ्लैट ही रहा है. मतलब 53 करोड़ के अराउंड ही अपना टॉप लाइन मूव हो रहा है. तो सर इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है क्या? इसमें जो कॉम्बिनेशन है यूट्यूब व्यूज में, इसमें नॉर्मल वीडियोस एंड शॉर्ट्स का भी है. तो शॉर्ट्स का एक नया है, आपको पता है शॉर्ट्स में बड़ा क्रेज है, तो शॉर्ट्स के बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो वो एक इम्पैक्ट उनका है, तो वो भी इसमें काउंट होता है. तो सर वो तो लास्ट क्वार्टर में भी शॉर्ट के व्यूज तो कंसिडर हुए होंगे ना सर. तो मतलब आपका बोलना ये है क्या कि शॉर्ट डिस्प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हुआ इसलिए व्यूज ज्यादा दिख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से जो आप कंपेयर कर रहे हो, आप कौन से क्वार्टर से? फर्स्ट क्वार्टर से? मैं सीक्वेंशियली कंपेयर कर रहा हूँ सर. मैं Q4 FY23 की बात कर रहा हूँ और Q1 FY24 की बात कर रहा हूँ. सीक्वेंशियली अपने यूट्यूब व्यूज बहुत ह्यूज जंप दिखा रहे हैं, बट टॉप लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट है. तो मेरा सवाल ये था सर. सुशांत, तो Q4 में और दिस ईयर Q1 में कितना है फर्क है? Q4 it was around 33.6 billion and in Q1 it is around 48.3 billion views. ओके, तो ये कोई क्वार्टर का है, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट्स का बहुत बड़ा उनका जंप आया है. शॉर्ट्स इज अ बिग जंप. नॉर्मल में भी जंप है, ऐसा नहीं. नॉर्मल शॉर्ट्स में देयर इज अ ह्यूज जंप. तो शॉर्ट्स में जो पहले जस्ट अ रिक्वेस्ट सर, शॉर्ट की व्यूज अगर आप प्रेजेंटेशन में अलग से अगर आप पुट करोगे तो हमें एक बेटर आइडिया आएगा सर अंडरस्टैंडिंग के लिए. थोड़ा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कांट डू दैट. तो ये साथ में इट्स बेटर फॉर अस, क्योंकि वी कांट रिवील अवर एक्चुअल नंबर्स. देयर इज अ कंपटीशन आल्सो गोइंग ऑन, तो आप प्लीज वो थोड़ा सा समझो आप. ओके सर. अनदर क्वेश्चन अबाउट रेडियो इंडस्ट्री. तो आप लोग कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे कि अपना कुछ डिस्प्यूट है रेडियो इंडस्ट्री के साथ. तो सर आप कुछ इनसाइट शेयर कर सकते हो कि वो कहाँ तक डिस्प्यूट आया है और वो किस तरीके से हमें एडवांटेज हो सकता है फ्यूचर में, पोटेंशियल उसका क्या हो सकता है? पिछले 10 साल से डिस्प्यूट है एंड एक कॉपीराइट बोर्ड ने एक ऑर्डर पास किया था आज से 10 साल पहले, एंड दैट ऑर्डर वाज वैलिड टिल 2020. 10 साल का हमको परमिशन दे दिया था, लेकिन हमने उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी बहुत बड़ी फाइट की थी. और वो फाइट हम पीपीएल के थ्रू गवर्न करते थे. एंड उसके बाद 2020 में जब वो ऑर्डर खत्म हुआ तो गवर्नमेंट ने कॉपीराइट बोर्ड बनाया और बोर्ड ने हमारे फेवर में ऑर्डर किया हुआ है. प्लस वो जो केस चला था जो 2010 में जो हमने कॉपीराइट बोर्ड ने ऑर्डर किया था, उसका हमने मद्रास हाईकोर्ट से केस भी जीत चुके हैं. एंड नाउ रेडियो इंडस्ट्री हैज गॉन इन हायर बेंच और कोर्ट. सो वहां पर अगेन झगड़ा चल रहा है. लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि वी विल सी अ बिग मनी कमिंग फ्रॉम रेडियो. नॉट वेरी बिग, बट एक सब्सटेंशियल अमाउंट आएगा इंडस्ट्री को, जो कि हम सब में डिवाइड होगा एंड एक इम्पैक्ट, उसका एक इम्पैक्ट आएगा जरूर. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Before we take the next question, I'd like to remind all participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. The next question is from the line of CA Karvit Goyal from Invest Analytics. Please go ahead. Hello. Good afternoon, sir. Am I audible? Yes, sir, you are. You may please continue. Congratulations for a good set of numbers, sir. My first question is, in your presentation, names like Instagram and Facebook are not getting appeared, while these names were there as our digital partners in last presentation. So what is the reason for it, sir? Instagram, Facebook, we have not reviewed our deal. हमारी इनसे जब लास्ट टाइम डील हुई थी तो उनके जो नंबर्स थे बहुत बड़े थे. तो वी थॉट कि आप यू विल गिव माय कंटेंट फॉर 2 बिलियन पीपल. अगर आप 200 करोड़ लोगों को मेरा कंटेंट दिखा रहे हो या वो एंटरटेन हो रहे हैं, तो वी नीड अ करेक्ट प्राइस. तो दैट टाइम जैसे कि इसका इनिशियल हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि हम क्या होगा. एंड आगे चल के वी विल वर्कआउट मेक अ मॉडल लाइक अ यूट्यूब की वेयर जो भी कस्टमर या जो भी फैन फॉलोअर उधर देखेगा आपका कंटेंट, तो उससे आपको कुछ शेयरिंग होगा एंड अपने रेवेन्यू सबके बढ़ेंगे. वी विल ऑल्सो मेक मनी इंस्टाग्राम से. But after 2 years, they have not done anything in that. The progress कुछ नहीं था. And they again said कि
आप हमें और 2 साल के लिए लाइसेंस विदाउट एनीथिंग, एक मार्जिनली आपको हम लमसम पैसे देंगे और आप हमें दे दो। वेयर वी फेल्ड कि नो, हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, जो हमारा कंजम्पशन है बहुत ही ह्यूज था। तो इसके लिए हमने फिर उनके साथ काफी नेगोशिएशन किए थे, 2-3 महीने से नेगोशिएशन चल रहे थे, बट अल्टीमेटली फरवरी में उनसे कि आप भले प्लीज हमारा कंटेंट यूज करना बंद कर दीजिए एंड आप नहीं कर सकते जो आप हमको ऑफर कर रहे हो, इट्स टू लेस मनी, तो वी कांट डू दैट। तो इसके लिए हम इंस्टाग्राम पे अभी नहीं है। Sir, if this deal is not renewed, so in FY24, how our revenues are going to be impacted? रेवेन्यू देखिए, जो कंटेंट होता है ना, अभी आप देखो हम अगर इंस्टाग्राम पे नहीं है तो हमारे शॉर्ट्स में कितना आप देख रहे हो, अगर यूट्यूब के जो शॉर्ट्स हैं सिमिलर काइंड ऑफ ऐप है, तो यहाँ नहीं तो वहाँ ऐप आ जाएगा ना बिजनेस। तो आज अगर आपको आज कोई गाना सुनना है या आपको कुछ भी गाने के साथ कुछ फन करना है, एंटरटेन करना है, तो आप करोगे ना, आप तो कोई और ढूंढ लोगे, आप छोड़ोगे थोड़ी। आपको अगर कुछ गाना सुनना है तो आप सुनना बंद कर दोगे, तो ऐसे तो शायद नहीं होता ना। एंड अगर आप देखो, हम लास्ट ईयर भी हम विक पे नहीं थे, सावन पे नहीं थे, अभी हम सावन पे आ गए हैं वापस, तो हम तो टचवुड वी आर ग्रोइंग। तो उसका मुझे लगता नहीं कि म्यूजिक में इसका कोई फर्क पड़ता है, तो आई एम ओके विद दैट। और क्या है ना, हम अगर अपना कंडीशन नहीं डालेंगे, जो सर्विस अगले 5 साल में 500 करोड़ की हो सकती है, वो सिर्फ 25-30 करोड़ की या 50 करोड़ की रह जाए, तो वो नहीं कर सकते ना। वी हैव टू एम फॉर अ बिगर थिंग। तो एक बड़ी मंजिल के लिए छोटी छोटी चीजें कभी लॉस करनी पड़ती है, दैट्स फाइन। Understood, sir. And sir, second is, we did 56% kind of OPM margin in FY23, and in this quarter it is around 66%. So how do we see this metric on full year basis for FY24 going forward? आई थिंक जो हमारा टारगेट है इस साल का, हमारा टारगेट है, एंड आई स्ट्रांगली फील इट्स अचीवेबल। 30% टॉप लाइन विल ग्रो एंड 30% बॉटम लाइन ऑल्सो विल ग्रो। So, sir, I was asking from the OPM margin perspective, sir. So, last year in FY23, you did around 56% margin, OPM EBITDA margin. And in this quarter, first quarter, it is 67%. So, that's why I am asking, on full year basis, what is your target for the EBITDA margin, sir? सुशांत, आपके पास है वो नंबर? Mr. Goyal, in terms of EBITDA margin, will be similar to last year. And let's say this quarter primary 66.5, let's say don't compare it on a quarter-on-quarter basis and compare us on a full year basis. That would be the request. And the top line and let's say the bottom line will grow by 30%. Understood, sir. Understood. Okay, sir. That's it from my side, sir. All the best for the future. Thank you. Before we take the next question, a reminder to the participants again, if you have a question, please press star then 1. The next question is from the line of Ravi Naredi from Naredi Investment. Please go ahead. So, Rani sir, thank you again for posting nice results. You are a magician in this industry and doing good things for the company. Sir, YouTube user rises 41% in Q1 and against the Q4. So, where you see optimum level of this user base? थैंक यू रवि जी। आई फील कि ये जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब इज लाइक अ ओशन, और मुझे लगता है कि आई फील कि हमने अभी तो शुरुआत की है। इट्स माना ये कुछ भी हो सकता है, ये आप सडनली यू विल सी, तो ये बहुत बड़ा है। इसका एस्टिमेट करना वैसे तो अनलिमिटेड है, बट वही एक हमारा जो बेसिस होता है कि हमको एक कंजर्वेटिवली या मिड में हम कुछ अपने आप को एस्टिमेट करें, तो हम ओवरऑल एस्टिमेट करते हैं जो हम 30% का इस साल का भी टॉप लाइन में, और ऑन द कॉन्ट्री जो बॉटम लाइन में आई ऑलवेज से कि 15-20% विल डू ग्रोथ, बट मुझे लगता है कि इस साल हम लोग बॉटम लाइन में भी 30% ग्रो करेंगे। तो ये आप बेंचमार्क लेके चलिए। तो अगर जैसे अगर आप देखो कि 21 में वी हैड अ 90 का टॉप लाइन, बट उसके नेक्स्ट ईयर में 22 में वी हैड अ 135, 50% ग्रोथ हुआ था टॉप लाइन में। उसके नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर वी डिड 187, 186, 187, जो कि 38% का ग्रोथ था। तो एंड अगर आप देखो 21 में 90 से 186, 87 इन 23 2 years में वी आर लिटिल मोर देन डबल।
So I think आप वो 30% टॉप लाइन एंड दिस ईयर बॉटम लाइन भी 30% ग्रो होगा, जो हमारा बजट या हमारा जो टारगेट है। तो आप वो एक लेके चलिए बेंचमार्क, अगर यूट्यूब और मेरे को लगता है कि और बढ़ सकता है तो बढ़ सकता है, मैं उसमें डिनाई नहीं करता हूँ। इट्स रियली अ बिग थिंग। सर ये तो अभी जून वाले क्वार्टर में 58% से नेट प्रॉफिट बढ़ के आया है, तो ये तो अभी आप 30% ही बोल रहे हो, ये 50% से ऊपर की ग्रोथ अभी जून क्वार्टर में ही आई है। नहीं, लेकिन आपको क्या है ना, प्लीज आप हमारी इंडस्ट्री, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि प्लीज डोंट वैल्यू अस ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। कभी कंटेंट ज्यादा रिलीज होता है, कभी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, बट वट एवर इज द थिंग्स आर गोइंग ऑन। ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्रीज में अभी जो आप कह रहे हो ओशियन है और यहाँ पे कहीं एंड नहीं नजर आ रहा है, तो वैसा ही लग रहा है। सर, कंटेंट कॉस्ट इज 12.2 crore and rising continuously. That is good also. So have you make up your mind how much it will be in percentage of revenue terms? It is 22-23% in now. हमें टर्नओवर का इतना % कंटेंट कॉस्ट लेना ही है, गाने लेने ही है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में इमेज है ऐसा कुछ? या मुझे लगता है कि कंटेंट कॉस्ट हमारी 28-30% होनी चाहिए, जो भी हमारी टॉप लाइन होती है। 30% के अराउंड हमारी, अगर कभी कोई अच्छा कोई कंटेंट मिलता है तो वी शुड गो अप टू 32, 33, 35% ऑल्सो, बट उस रेंज में ही होना चाहिए, आई फील। ओके। सर, अभी जो फिल्मों के म्यूजिक का बहुत महंगा हो गया है, आप इस सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हैं? देखिए, हम ऐसे वो जो सब करते हैं, जो बिडिंग करते हैं, हम उसमें नहीं जाते। हमारे अपने कुछ रिलेशंस हैं कुछ कंपनियों के साथ, एंड हम उनके साथ बैठ के उनकी जो रियल वैल्यू होती है थोड़ा नीचे ऊपर करके वी क्लोज द डील इन फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ, तभी धंधा हो पाता है। और हमें ज्यादा चाहिए भी नहीं, हमें 4-6 पिक्चरें चाहिए साल के लिए, एंड वी आर वेरी हैप्पी। बिकॉज एक अच्छी बात है, अगर आप देखो लास्ट 2-3 साल से जो हमारा रिकॉर्ड कह रहा है, विदाउट हैविंग 2-3 बिग सर्विसेज ऑन विथ अस, हम जहाँ पे हमारा म्यूजिक अवेलेबल नहीं था एंड हमारे पास ज्यादा न्यू रिलीज भी नहीं थे, हम 50%, 38% ग्रो कर रहे हैं। 2 साल में हम डबल हो गए। तो हमारा जो पुराना रेpertoire है, ओल्ड कैटलॉग, कुछ हम उसके लिए कुछ गाने हम रिक्रिएशन भी कर देते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और अभी भी मुझे लगता है कि वो डे बाय डे ग्रो होगा। तो अगर न्यू रिलीज आते हैं तो इसके लिए हमें बहुत लिमिटेड न्यू रिलीज चाहिए। 4 पिक्चरें भी मिल गई तो 5 पिक्चरें मिल गई तो बहुत हो गया हमारे लिए। तो वी विल मेंटेन दैट और हमारा ग्रोथ होगा। हमें उसकी मेरे ख्याल से अगले 20-25 साल तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है किसी यस। और वो जो भी मूवी अपन बनाएंगे टिप्स फिल्म में, उसका म्यूजिक अपने पास ही रहेगा या अपने को ज्यादा कॉस्ट मिले तो अपन सेल भी कर सकते? वो भी हमने ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर एक वैल्यूअर अपॉइंट किया था। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी एंड जो हमने हमारे ऑडिटर्स के साथ शेयर की और प्लस हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके साथ भी शेयर की, उनसे दोनों से क्लियरेंस हो गया। तो वी विल अकॉर्डिंगली वी डू आर्म्स लेंथ पे हम अपने टिप्स फिल्म की पिक्चरें खरीदेंगे म्यूजिक के लिए। ओके। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ग्रेट गोइंग। यस सर। Thank you. The next question is from the line of Priyank Sarkar from Farming and the Capital. Please go ahead. Yeah. Hi, sir. Good afternoon. I just wanted to touch base on the IPRS part, sir. What was the growth of IPRS in FY23? And I'm not looking quarterly, deliberately. And, sir, how is the outlook going to be from this revenue coming from the IPRS segment? Yeah, IPRS is a publishing body. IPRS की जो 2018 में we settled with them, तो 2018 में जब सेटल हुआ था तो उनका कलेक्शन था 50 crores उस टाइम पे, एंड आई थिंक दिस ईयर 23 में जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो 500 crore प्लस उन्होंने कलेक्ट किया है। एंड उसकी जो लास्ट ईयर जो आपका सवाल था 22-23 में, आई थिंक लास्ट ईयर शायद 400 या 450 करोड़ था, इस साल 500 करोड़ हुआ है। तो ये और वहाँ पर भी काफी अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि एक तो अच्छी बात है कि ग्रोथ भी हो रही है, प्लस जो पुराने सेटलमेंट हैं वो भी हो रहे हैं, जो उन्होंने पैसे नहीं दिए थे किसी ने, तो वो भी हमें पैसे आ रहे हैं। तो आई फील कि वो और मेरा एस्टिमेट है, मेरा थिंकिंग है कि अगले 5 साल में
वो सोसाइटी 1500 करोड़ तक भी कमा सकती है, अर्निंग कर सकती है. So that's a big business going to happen, I feel. एक सेकंड सर, FY23 में 400 करोड़ था और FY24 में एक्सपेक्टेशन 500 करोड़ फॉर द इंडस्ट्री. Yes. और ये आप बोल रहे हो 3-4 साल में इट कैन गो अप टू 1500 करोड़. हाँ, 1200-1500 करोड़ हो सकता है, होना चाहिए, आई फील. सर इतना जंप ये IPRS में कैसे आता है सर? दैट इज माय मेन क्वेश्चन एक्चुअली. उनको सब लोगों ने उनको पैसे देने हैं ना, पहले नहीं देते थे पहले. और पब्लिशिंग राइट ऑल्सो यू हैव टू गिव पब्लिशिंग राइट्स, तो उनको पैसे मिलेंगे उनको. ओके फेयर एनफ सर. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you. The next question is from the line of Mayur Parkeria from Wealth Managers. Please go ahead. Good morning, sir. Am I audible? Yeah. Sir, congratulations on good set of number, and again, congratulations for continuing with the policy. Every quarter we'll keep on just reiterating this, and congratulations. So that I know you don't intend to change that, but it's a amazing policy. And I think, sir, in the start of the call, you mentioned that we have done some working with respect to if the content cost was to be charged over 10 years. How the profit would have been looked. Sir, I think we should be the benchmark and let others do the recalculation of what if their profits would have been impacted had they followed you. I don't think we need to follow the other policy. We should, this is a more rational and conservative, and let others follow you rather than, we following the other practices. So that was just a small observation. Sir, on the content cost, sir, press release में हम mention करते हैं 12 crore. Sir, my request is if you can add that in the presentation table also, then same information we can get in the presentation also. Along with the results table, because otherwise presentation में जो results table है, that is actually replicate of your the press of your statutory release. So उसमें अगर हम content cost अलग से डालते तो presentation का भी value add हो जाती है, and the information is similar on both the presentation and the press release. Just a small request. Sir, इस बार जो इंडस्ट्री की रेवेन्यूज की आपने बात की सर 2200 2500 करोड़, एंड वी आर क्लोजर टू on 187. March 23 की बात करेंगे, so that is approximately 9% market share. So over long periods of time, over 4-5 years, do we have any targets that we want to reach there in terms of market share, or do you think that the normal industry growth will play? I know we have outperformed the industry significantly, but do you think that do we have any market share in our mind with respect to which we want to reach? Yeah. So आपने जो पहले सजेशन दिया 10 ईयर का जो हम कंपेयर करते हैं, ये दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन, एंड आपको मैं रीअश्योर करता हूँ आप सबको कि हम कभी ये चेंज नहीं करेंगे पॉलिसी. वी आर वेरी क्या बोलते हैं, स्टिक ऑन दैट कि ये हमारे बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म अच्छा है कि वी शुड कीप राइटिंग ऑफ सेम क्वार्टर सेम. जैसे PS2 वी रिलीज इन 15 मार्च, सिर्फ एक गाना रिलीज हुआ था, बट वी रिटर्न ऑफ इन दैट क्वार्टर इटसेल्फ. लास्ट ईयर में वो निकल गया. तो ये आप रेस्ट अश्योर रहिए, हम कभी भी नहीं करेंगे. खाली आपके रेफरेंस के लिए थोड़ा सा इजी कर दिया था, एंड ये मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ आपको. प्लस जो दूसरा कंटेंट का जो आपका सजेशन है कि इट शुड बी इन प्रेजेंटेशन, ओके, एग्री दैट पॉइंट ऑल्सो, वी विल पुट इट देयर, नॉट अ प्रॉब्लम. एंड थर्ड, यू सेड कि जो हमारे जो मार्केट शेयर व्हाट वी एस्टिमेट, मुझे लगता है कि अगले 3-4 साल में हमारी टारगेट है कि हम 11-12% पे आए मार्केट शेयर ऑल्सो. वी शुड लुक फॉर दैट. तो मुझे लगता है कि द वे आवर कंटेंट, आवर कैटलॉग, आवर रेpertoire इज परफॉर्मिंग, और हमारी जो टारगेट है कि न्यू रिलीज उसमें कैसे हमको प्ले करना है, जो हमारी सोच है, उसके हिसाब से हमारे लिए 11-12% अचीव करना पॉसिबल है, और हम अचीव करेंगे. Okay. Sir, yeah. So, Mayur, just to add, the content cost is there in the presentation. We have highlighted separately in our P&L. As a part of number 14. Slide number 14. 14, yes. You can see the line item, content cost.
slide number 14 is industry-leading financial performance. Page 14. Page number 14. There is a P&L statement, and you will see the content cost separately highlighted. Okay. I'm so sorry. My apologies. I missed this. I'm so sorry. I'm so sorry. Okay. Thank you so much for highlighting this. So दूसरी ये जो industry की around revenues की हम बात करें, तो उसमें based on your understanding of how the industry is shaping up, sir, उसमें subscription revenue I am sure would be very small and marginal. Sir, how do you see that shaping up, or do you think कि अगले 4-5 साल में भी what we need to focus on is the same share of advertising revenue and other revenues which will come through? Subscription revenues, how based on your understanding with how the platforms and other things consumer behavior. So what would be the current scenario, and how do you see that in the next 3-4-5 years? मेरे ख्याल से दोनों सर्वाइव करेंगे. सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ा होगा. आई स्ट्रांगली बिलीव 4-5 साल में काफी बड़ा हो जाएगा, बट दोनों सर्वाइव करेंगे. एड मॉडल भी सर्वाइव करेगा. इंडिया है ना, इंडिया एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक इंडिया शहरों में बसता है, एक इंडिया रूरल है. तो मेरे ख्याल से रूरल में एडवर्टाइजिंग मॉडल चलेगा, एंड शहरों में लोग विल सब्सक्राइब कि वो उनको एड नहीं चाहिए. दे वांट अ क्लीन म्यूजिक और अ क्लीन वीडियो. तो मुझे लगता है दोनों मॉडल सर्वाइव करेंगे और दोनों पैसे देंगे. आज जो सब्सक्रिप्शन में ग्रोथ होगा शहरों से आएगा, एंड रूरल से एडवर्टाइजिंग वाले मॉडल में बहुत ग्रोथ आएगा. तो मुझे को लगता है दोनों सर्वाइव करेंगे, दोनों में ग्रोथ आएगा. अच्छा, तो सर सो दैट मीन्स अपने पास 4 लीवर्स तो सामने ग्रोथ के बहुत दिख रहे सर. एक तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू एट एन इंडस्ट्री लेवल ग्रो होगा, तो उसका भी शेयर हमको मिलेगा, वो ग्रोथ होगा. दूसरा ये IPRS का ग्रोथ आप बोल रहे हो वो होगा. फिर रेडियो के थ्रू होगा, वो मीनिंगफुल नहीं होगा बट वो भी होगा. एंड 4 अपने ओन फिल्म्स का जो लॉन्चेस होगा और उसकी वजह से बेटर अगर अपनी विजिबिलिटी बढ़ती है, तो सर ऑल दिस शुड प्ले आउट ओवर द नेक्स्ट 3-4 years, right? Yes, absolutely. Okay. Thank you, sir, and wish you all the best. Thank you. The next question is from the line of Maithili Balakrishnan from Alchemy Capital. Please go ahead. Thank you for the opportunity. Couple of questions. Ma'am, I'm so sorry to interrupt. This is the conference operator. Requesting you to please speak a bit louder, ma'am, so that your audio is audible. Sure. Wanted to check whether Savan and Warner, the revenues have started for us, or is that something that's still not there in the current top line? Warner is so already last 3 years we are money we are coming. We are showing in our every quarter-on-quarter basis. And Savan also, we started in March. So every quarter, Savan also, it will come. And only left out is Instagram and this one, Wink, Airtel. That's it. All we are available on all other platforms. Wink and दूसरा कौन सा सर आपने कहा? Instagram, Facebook. Okay, got it. So, but if the agreement happened in March, अच्छा तो March से ही मतलब आपका okay. And दूसरा आपके मतलब your doesn't mention the fact that there was some 3.75 crores which you had billed some person which went into bankruptcy. Could you just explain कि वहाँ पे क्या हुआ था? एक पार्टी है जिसने हमारे से लास्ट ईयर लाइसेंस लिया था 2-3 years बैक. तो उन्होंने उनसे नेगोशिएट कर रहे थे, बातें कर रहे थे, बट दे वर नॉट क्लोजिंग द डील. एंड हम कोशिश करते हैं कि पार्टनर से मिलके खत्म करें बातें, कोई सीरियस मैटर नहीं हो. बट अगेन वी सेड कि दे आर नॉट ओनली टॉकिंग. तो वी पुट NCLT केस ऑन देम. एंड तो अभी वो now they have send us a request कि चलो let's talk. तो वो एक हमने डाल दिया. तो उसके लिए हमने बोला कि उसका क्या होगा, अल्टीमेटली सेटलमेंट करेंगे नहीं करेंगे, या वो कोर्ट ही सेटल करेगी, NCLT कोर्ट सेटल करेगी. तो दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट इट असाइड. ठीक है. In terms of the upcoming content, could you just comment on some of the key movies that आपको लगता है कि वहाँ पे मतलब you will be able to do it over the next couple of quarters? We have 2 movies. Our Tips Films की 2 movies हैं. Merry Christmas, which is in Hindi, Tamil and Telugu,
Plus we have one more movie, Ishq Rebound. पहले एक इश्क आई थी जहाँ पर शाहिद कपूर एंड अमृता राव को हमने लॉन्च किया था. उसके अलावा वी हैव साउथ में एक बड़ी फिल्म है तेलुगु में, हरी हरी वल्ला मल्लू. पवन कल्याण इज अ स्टार. एंड प्लस वी हैव अनदर मूवी, वी हैव 2 मूवीज फ्रॉम बालाजी टेली फिल्म्स. एकता कपूर का जो प्रोडक्शन हाउस है, उनके 2 मूवीज है. एक है क्रू, वो बड़ी मूवी है, उनका म्यूजिक बहुत अच्छा होगा. जो म्यूजिक अच्छी बनाते हैं, वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर या सेटअप है, वो एक आएगी. एंड एक है बकिंगम मर्डर, करीना कपूर एंड हंसल मेहता जी बना रहे हैं वो मूवी, वो भी बालाजी की है. तो ये हमारे पास 4-5 बड़े मूवीज इस साल के लिए है. Okay, and all of them will probably get released this year itself. Yes, this year, ये इस साल में ये सब आ जाएंगे जो मैंने नाम बताया. ठीक है. दूसरा मुझे सवाल ये पूछना था कि आपको is there any pressure from YouTube or other people to accept a lower share on the ad revenues per se? Because जिस तरीके से आपके व्यूज बढ़ रहे हैं उस तरीके से आपके रेवेन्यूज लीनियरली नहीं बढ़ रहे हैं. सो जस्ट क्यूरियस ऑन दैट फ्रंट. नो, वो तो सवाल ही नहीं है. आपको मालूम है कि हम तो काफी झगड़ा करते हैं. टिप्स तो झगड़ा करने में फेमस है कि हम मानते नहीं है इतना जल्दी, क्योंकि हमारे कंटेंट की वैल्यू है एंड अवर एक्सक्लूसिव कंटेंट है. कंटेंट क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है. तो वो तो कभी किसी ने बोला नहीं है. हमेशा ऊपर ही जाने की बात होती है. खाली ये होता है कि आप ये हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं, बट क्या है ना, हमें भी ऑडियंस को एंगेज रखना है. तो आस्ते आस्ते ऑडियंस इसको लगता है कि आज मुझे फ्री मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एवरीबडी विल पे. आप देखो अगर टीवी इंडस्ट्री में भी हम केबल पहले बहुत चीप लेते थे, उसके बाद अल्टीमेटली वी ऑल शिफ्टेड टू डिजिटल. उसमें हम जी का डिश एंटेना लिया, डिश टीवी लिया, या टाटा स्काई लिया, या एयरटेल लिया. कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने, मेजोरिटी ऑफ पीपल हैव टेकन दोज लाइन्स. तो मुझे लगता है कि हमें कस्टमर को इन्वॉल्व रखना है. भले उसकी एक आदत तो पड़ रही है ना कि कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, भले वो एड से ही देखे, भले थोड़े कम पैसे भी आए, तो एटलीस्ट हम उनको इंगेज कर रहे हैं, वो आगे आएंगे. बट अल्टीमेटली एवरीबडी विल पे. हाँ, मैंने जैसे पहले बताया जो थोड़ी देर पहले कि 2 मॉडल हो जाएंगे. एक होगा सब्सक्रिप्शन, भाई आप एड फ्री देखो, एंड दूसरा होगा एड. तो वो आपको एड भी दबा के दिखाएंगे अगर आप पैसे नहीं देंगे. अगर आप खुद भी रियलाइज करते होंगे कि यूट्यूब अगर आप कॉन्स्टेंटली देखते हो तो आपके एड का जो होगा ना, उनका वो मीटर बढ़ाते जाएंगे. अगर आप पहले 15 मिनट का कंटेंट देखते हो तो इनिशियली 15-20 डेज यू विल बी सी विदाउट एड. उसके बाद आपको आस्ते आस्ते करके वो 4-5 एड तक लेके जाएगा 15 मिनट के कंटेंट में. तो वो तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो मेकिंग अ ह्यूज मनी, मतलब विदाउट पेइंग अस एनीथिंग. और उनका कोई एनजी नहीं है, अर्निंग मॉडल. तो वो तो उनके लिए भी तो ग्रोथ करनी है ना हर साल. तो वो तो मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. Not to worry at all. Got it. And in terms of the non-digital revenues, उसमें मतलब could you just help us understand कि what are the parts of it and वहाँ पे मतलब आपको कैसा ग्रोथ दिख रहा है? नॉन डिजिटल रेवेन्यू में 3-4 चीजें हैं. एक टीवी है, एक रेडियो है, और एक वो पब्लिक परफॉर्मेंस है जहाँ पर हमारी म्यूजिक चलती है शोज में, इवेंट्स पे. आप होटल में जाते हो, मॉल में जाते हो, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, वो वेरी गुड ग्रोथ होगी. एंड टीवी में भी सबका ऐसा मानना है कि ग्रोथ नहीं है, लेकिन टच विद वी आर डूइंग वेल. हमारा कंटेंट चल रहा है वहाँ पर. वहाँ भी क्या होता है कि हर टीवी स्टेशन की अपनी प्रायोरिटी है. भाई अगर उसको 200 करोड़ रुपया खर्च करना है तो ही हैज 200 करोड़. आज से 5-6 साल पहले वो हमें 5-6 प्रायोरिटी पे रखते थे कि इसका कंटेंट लेना है कि नहीं लेना है. कई स्टेशन हमारा कंटेंट नहीं भी लेते थे, लेकिन आज हम उनके प्रायोरिटी में नंबर 2 या नंबर 3 पे हैं. और हमारे को और पैसे मिलते हैं. उन्होंने बजट नहीं बनाए, लेकिन दे सिलेक्ट कि कौन से पार्टनर को ज्यादा पैसे देने, किसको और कम करना है. अगर किसी को पहले 10 करोड़ मिलते थे तो शायद उसको भी 5 करोड़ मिलेंगे. हमें अगर 4 मिलते थे तो हमें 6 मिलेंगे. तो वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन वो टीवी वाले भी करते हैं. हम भी अपने कंटेंट की वैल्यू की ओवरऑल हमारा कैसे मार्केट शेयर बढ़ रहा है, कि हमारा माल अगर डिजिटल पे अच्छा सेल हो रहा है, यूट्यूब पे अच्छा हो रहा है, तो व्हाई नॉट टीवी विल पे अस मोर. तो वो हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उनसे पैसे ज्यादा डिमांड करते हैं. टचवुड अभी तक सक्सेसफुल हो रहे हैं. Got it. And my last question is on regional content. Could you just help us understand कि अभी आपका कितना regional content है, and incrementally is that something जहाँ पे हम focus करेंगे, या मतलब it's better to be focused on the mainstream Hindi music? रीजनल में हम जो ओल्डन डेज थे
2006 के पहले हम रीजनल में अवेलेबल थे सब जगह. फिर हमने थोड़ा सा स्टेप बैक किया था एंड वी फोकस्ड ऑन हिंदी बोर्ड की हिंदी करेंगे, छोटा कंटेंट बनाएंगे बट हिंदी पे फोकस रहेंगे एंड हिंदी पे फोकस रहे थे हम. उसके बाद हमने जब ये कोविड आया 2020 में हमने फिर से रीजनल में स्टार्ट किया. हमने 10-15 चैनल स्टार्ट किए, जो भी लैंग्वेज है मोस्टली वी आर देयर. तो बट मुझे लगता है कि तभी हमारा फोकस ये था कि 70% फोकस करो ऑन मेन लाइन एंड 30% फोकस करो ऑन रीजनल. और बट अभी एट प्रेजेंट आई फील कि हमारा जो फोकस अभी है, अभी हम स्लोली फोकस शिफ्ट कर रहे हैं. 85-90% वी विल ऑन अ मेन थिंग एंड 10-15% विल बी ऑन रीजनल. हम गोइंग फॉरवर्ड, ये हमारी सोच है. Got it. Thanks a lot, sir. That's all from my side. All the best. Thank you. The next question is from the line of Sagar Jetwani from Phillip Capital. Please go ahead. Yeah, sir, thanks for the opportunity. We have taken 5-6 names, film names, where we wish to acquire the content. So out of this 85-90 crores full year guidance that we have given, तो ये 5-6 फिल्म जो है उसमें कंटेंट कॉस्ट कितना लगेगा इंक्लूडिंग प्रमोशंस एंड ऑल? मेरे ख्याल से मेजर तो उसमें चला जाएगा. तो बॉल पार्क एनी नंबर इफ यू कैन प्रोवाइड? 50 करोड़ पकड़ के चलो, 50-60 के बीच में. ओके 50-60 के बीच में इंक्लूडिंग मार्केटिंग प्रमोशंस एक्सेट्रा. या Okay. This is first. And second is that, Saregama uses artificial intelligence in song selection. Are we also using any kind of technology for same or is it purely judgmental? See, जो टेक्नोलॉजी है ना, that always enhances कि अपने बिजनेस को कैसे और एनहेंस किया जाए. तो वो तो सब यूज करेंगे. आज अगर मैं बोलूंगा कि मैं टेक्नोलॉजी यूज नहीं करूंगा तो मेरे ख्याल से वो तो पॉइंट रहेगी नहीं. तो टेक्नोलॉजी तो यूज करनी ही पड़ेगी आपको. तो हमारे पास भी एक्सपर्ट हैं और आप वेरी सून यू विल हियर सम मोर न्यूज फ्रॉम अस कि क्या हम कर रहे हैं. तो बताएंगे आपको नेक्स्ट क्वार्टर में इंशाल्लाह. तो वो भी बहुत कुछ हो रहा है. That's great to hear, sir. And next is that, in the last Concall I had asked you, sir, that, YouTube पे हमारे जो एड्स है बेसिकली वो कितने ऐसे एड्स है जो कितने सॉन्ग्स ऐसे हैं जिनमें एड्स प्ले हो रहा है. Have we gone through that? Any comeback on that, sir? देखिए, ऐड तो मेरे को लगता है कि भले कम ऐड हो लेकिन ऐड तो चलता ही होगा. उनके जो यूट्यूब के जो अपने क्राइटेरिया है कि एज ग्रुप है, मार्केट है, गाना किस टाइप का है, तो वो जो कस्टमर ऐड करता है उसको बहुत सारी चीजें मिलती है. तो मुझे लगता है ऐड तो सब गानों पे होगा ही होगा. बट यू कैन से जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू होगा ना, वो जो 1000-2000 गाने जो टॉप होते हैं उसके ऊपर मैक्सिमम रेवेन्यू होगा. यू कैन से दैट. Okay. So we are not in a position to monitor that ad, where is it playing, because we get a sharing pool from the ads as well. So that's why this question I thought to ask you. नहीं होगा. मेरे को एक्चुअली इतनी डिटेल नहीं मालूम है. मैं आपको ये बाद में बता दूंगा आपको. बट गिरीश, कैन यू फाइंड आउट एंड टेल हिम कि इसका क्या है? Yes, we can surely do that. Yeah. In fact, last time we had actually done some analysis and we found that on every second video of ours we are getting an ad placed. So we were we saw that number. We've done that deep analysis, but this particular aspect we will come back to you for sure. Sure. Okay. So these were my questions. Thank you and all the best, sir. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Saket Mehrotra from Tusk Investment. Please go ahead. Thank you. Sir, any visibility on how do you see the paid subscriptions shaping up, like in the last 2-3 years and across these quarters? Would be helpful to know what your views are. अभी तक संकेत उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, बट होगा क्योंकि काफी कंपनीज पुश कर रहे हैं अपने आप को कि हम पेड सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं. जैसे यूट्यूब का जो म्यूजिक का मॉडल है वो तो है ही पेड सब्सक्रिप्शन, एंड स्पॉटिफाई इज ऑल्सो पुशिंग कस्टमर्स की उनके जो फ्री वालों के लिए जो बॉटम लाइन है ना वो टाइट करते जा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये होगा. एंड मेरे ख्याल से
लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू 27% ग्रो हुआ था, तो वो अच्छा है। बट क्या ना, नंबर इतना छोटा है तो उसमें 27% शायद लगता है कि बहुत कम है। ये अगले 1-2 साल में 200% बढ़ना चाहिए शायद। तो लेट्स सी क्या कैसे होता है। ओके, एंड सर जैसे इस क्वार्टर वीव मेंशन्ड दैट वी रिलीज्ड ऑलमोस्ट 259 न्यू सॉन्ग्स. So does this like, is this across all channels, and does it like include so a lot of times I see we re-upload our old songs, so is this like does that account for that as well कि ये मतलब जैसे ये ब्रांड न्यू सॉन्ग्स है। क्या होता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमने 2020 से हमने हमारी एंट्री की कि हम अपने सब लैंग्वेजेस में हम एंटर कर रहे हैं, और हमें सब लैंग्वेजेस में हमको टच करना है क्या है वहाँ पर, क्या अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं। तो हमें क्या है, हमारे को सडनली एक कैटलॉग भी बिल्ड करना था कि हमें कुछ, अगर कोई कस्टमर आए तो ऐसा नहीं खाली 5 ही गाने हो चैनल पे, तो एटलीस्ट 100 गाने 50 गाने कुछ हो। तो हम क्वांटिटी पे गए, और हमारा वो टारगेट अभी अचीव हो गया कि हमने एक अच्छा डिसेंट नंबर हर चैनल पे हमारे म्यूजिक का है। एंड नाउ वी आर फोकस कि चलो क्वांटिटी तो हो गई एक बार, अब वी विल फोकस मोर ऑन द क्वालिटी, बेटर क्वालिटी। मे बी नंबर हमारा 259 की जगह इस साल हमारा वही मेंटेन 700-800 गाने हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी विल मे बी डू 200-250 सॉन्ग्स अ ईयर। सो वो हमारा ऐसा सोच हो रहा है। तो विल सी, विल टेक अ कॉल इन 3rd और 4th क्वार्टर कि हमें किस तरह नाउ जाना है आगे। ओके, तो ये 800 गाने आप साल का कह रहे हो, राइट? एंड देन यू आर सेइंग यू विल टेपर इट टू 200। या इस साल हम 800 का करेंगे आगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, Thank you. The next question is from the line of Akshay Sam from Sam Capital. Please go ahead. Hello. Torani ji, first of all, congrats to you and your team. I mean, you've been delivering for the last few years consistently. It's great for us as shareholders as well. So, एक question था मेरे सर कि, I mean, our target is to become the top 3 music label in the country. But the thing is, content costs उतना है नहीं जितना टॉप 3 competitors. I know quantity is always not equal to quality wise, but the top 3 competitors of ours, top 4, are heavily outspending us in terms of content costs. At least जितना public view में दिख रहा है, at least on the big budget films and all that. I mean, what is your view on that? Yeah, that's true. But मेरे को लगता है कि content cost suddenly 1-2 साल, माना पिछले 6-8 महीने 1 साल से ऐसे हो गया कि suddenly पहले डबल तो था ही ऑलरेडी, बट अभी शायद 3 टाइम्स हो गया जो एक्चुअल उसकी प्राइस होनी चाहिए। तो ऑन द कॉन्ट्री वी शुड बी मोर कॉशियस। तो ये भी है पैरेलल जो आप ड्रॉ कर रहे हैं कि हमें नंबर 3 लेवल बनना है। आई स्टिल थिंक इट्स अचीवेबल। तो मुझे लगता है कि जो भी हम कंटेंट लेते हैं, इफ रियली फोकस ऑन अ गुड कंटेंट, अगर हमारे पास अगर अच्छा कंटेंट आ जाता है तो मुझे लगता है अभी भी हम वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो हम अपना उस तरफ से काम कर रहे हैं। लेट्स सी नाउ अल्टीमेटली क्या होता है। आई थिंक एक टारगेट बना के चलना तो पड़ेगा, और अल्टीमेट क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो फ्यूचर ईयर्स बताएंगे। एक्चुअली आज तक तो सब ठीक चल रहा है, एंड जो हम प्रिडिक्ट करते हैं हो रहा है, तो होप कि आगे भी होगा। Because ultimately, जितना market share हम gain कर रहे हैं in the future, I mean, that will also strengthen our hand in negotiating with the likes of DSPs and Spotify और ये सब। तो ultimately वो भी अपने लिए beneficial होगा future में। At least will become, our company will become future proof as well. अक्षय जी, मैं आपको एक बात बताऊं आपको, आज के जमाने में वो जमाना गया कि नेगोशिएशन होता था, एमजी मिलती थी। एवरीबडी 90% ऑफ द कंपनीज नाउ सेइंग कि आपका बिजनेस क्या है उसके करेंगे। अभी आपने शायद थोड़ा सा अगर आप डीप स्टडी करोगे तो अभी जो पहले प्रायोरिटी में 2 लेवल होते थे या 3 लेवल होते थे, उनको कई ऐप्स ने रिफ्यूज किया कि वी डोंट वांट योर कंटेंट, कि आप जो पैसे मांग रहे हो, आप बोलते हो कि आपके पास ये न्यू रिलीजेस है, ये है वो है, बट आपका परफॉर्मेंस नहीं है उतना। तो वो दे फील कि दिस इज बेटर देन ऑल दोज प्लेयर्स। तो ये द वे वी आर हैपनिंग ऑन स्पॉटिफाई एंड ऑल मतलब में, तो आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक कंटेंट एक्वायर करना और कंटेंट का परफॉर्मेंस इज 2 डिफरेंट थिंग्स। तो वो बहुत इश्यूज है मार्केट में, एंड टचवुड हमारे लिए इश्यूज कम हो रहे हैं,
औरों के लिए इशू बढ़ रहे हैं. So that's I feel that's a very positive for tips. And देखो. Thank you, sir, and best of luck to your day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Surbi from PwC. Please go ahead. Hi, am I audible? Yes, ma'am, you are. Yeah, sure. So congratulations on great set of numbers. I have two questions. Firstly, on margins, we've seen a significant improvement in margins in this quarter. So can you throw some light on how this margin improvement has happened and what has worked in our favor in this quarter? I understand we should not look at it from a quarter perspective, but still if you can share some insights on that. Sushant, take this one. Sushant, आप बताओ. Hi. Primarily is on account of the content cost. If you see this quarter, prime focus on this quarter only is primarily on account of content cost. It is around 12 crores. But what we say is do measure us on a year-on-year basis for the full 12 months and don't look specifically on the quarter and that quarter's margins. So, sir, we followed this policy of booking the content cost in the same quarter of the release. And now we said that we've added like around 259 songs, which is higher than the run rate of the songs that we've been releasing in the last 2-3 quarters. So, like, do you see content cost softening or are there any other reason behind this cost going down? So can you repeat your question? So the number of songs that we've released is higher on a sequential basis. And ideally, in the case when the content cost is going up, your content cost would have gone up or stayed in the same range where it was in the past 2-3 quarters. But we've seen significant savings on the content cost despite high number of songs that we've released. So what explains, I'm trying to understand how the content cost has, come down so significantly for you in this quarter. So primarily, if you look, there were no big movie songs released this quarter. These were primarily, let's say, regional songs and Hindi songs both. But there was no big movie. Let's say last year we had PS1, PS2 and Steady. This quarter, let's say we didn't have a big movie release. But let's say for next 9 months, as we have communicated in this call, the pipeline is good for us. Mm-hmm. Understood. And could you share some insights of what is the cost which has gone behind the new content and what is the revenue potential? So with new content, you can say content which has got released in the last 6 months. What we share typically is, let's say, for every content, let's say, the payback period would be around 4 to 5 years. It would be difficult to, let's say, break down and give you the 6 months numbers. But let's say any content we acquire on a basket basis, the payback period would be around typically 4 to 5 years. And has this payback period stretched for you a little bit because of increase in content cost versus what it was, say, 2 years back? It has. Marginally it has. But as you know that we are not aggressively bidding for the content. We need quality content. And that's why we are sticking to our payback period of 4 to 5 years. Understood. Thank you so much. That was helpful. Thank you. The next question is from the line of CA Garvit Goyal from Invest Analytics. Please go ahead. Hi. Thanks for the opportunity again. Just a clarification on in page number 6 in your slide. You have mentioned the music sector is 2,500 crore kind of in FY23, right? So what is the expected growth for that number or overall industry for next 3 to 5 years? Because you are saying after 3 to 4 years, you will be targeting somewhere 11 to 12% share in that. So that's why I'm asking. I think industry growth, जो industry के numbers हैं, I think it's in 15 and 20% के बीच में है industry numbers. That means it will prevail for next 3 to 4 years as well. Yes. Okay, sir. Thank you. Thank you. Before we take the next question, I'd like to remind participants, if you have a question, please press star then 1. The next question is from the line of Mayur Parkeria from Wealth Managers. Please go ahead. Sir, thank you to the opportunity again. Actually, I forgot to ask last time.
सर 2-3 क्वार्टर पहले एक बार आपसे बात की थी, एक रिक्वेस्ट थी कि सर इफ वी कैन ऑन एन एनुअल बेसिस या ऑन एनी पीरियोडिसिटी, सर इफ वी कैन गिव द अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ मच ऑफ आवर रेवेन्यूज कम थ्रू movie releases which have been before 2000, then before 2010, then before, उसको थोड़ा stacking करके एक broad color if you can give एक suggestion so that एक अंदाजा आएगा सर के where we are more stand and how we are progressing. सर आपने बोला था देखेंगे, देख सकते हैं तो सर just one more request again sir if possible sir. या ऐसे सोचते हैं, एक्चुअली सोच चालू है. हमारी जो इंटरनल टीम है कि हम क्या करें, तो इस पे आपको 1-2 क्वार्टर में बताएंगे. विल कम बैक. Right sir. Thank you so much. And sir, just have you mentioned that in this year we are going to spend 85-90 crores? Because I missed that, I think. For content, is that the target? Because 65-70 I remember. But आप 30% पकड़ के चलना, जो भी रेवेन्यू होगा 30% के आसपास का हमारा स्पेंड होगा कंटेंट कॉस्ट. अच्छा, एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आप नहीं. लास्ट ईयर वी स्पेंड 60 करोड़, तो ये साल का कंटेंट कॉस्ट ब्रॉडली उसी लाइन में रहेगा कि इट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज? थोड़ा तो इंक्रीज होगा, सिग्निफिकेंटली नहीं होगा, बट थोड़ा तो होगा इंक्रीज. Right, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thanks. Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. I would now like to hand the conference back to Mr. Nikunj Jain from Orient Capital for closing comments. Thank you. I would like to thank the management for taking the time out for this conference call today, and also thanks to all the participants. If you have any queries, please feel free to contact us. We are Orient Capital, Investor Relation Advisors to Tips Industries Limited. Thank you so much. Thank you. Thank you. On behalf of Tips Industries Limited, that concludes this conference. Thank you all for joining. You may now disconnect your lines. Thank you.